So the question says here, the oscillating electric and magnetic field vectors of electromagnetic wave are oriented along. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये एक दूसरे को कैसे ओरिएंट कर रही है. नाउ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्शन ए इज द सेम डायरेक्शन एंड इन फेज the same direction but have in phase difference 90 degree. They are mutually perpendicular. Direction is in the plane mutually perpendicular to each other but has a phase difference of 90 degree. So now the की कंसेप्ट हमें यहाँ पे बताना है. द क्वेश्चन इज, ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हमें बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के. तो की कंसेप्ट इज electromagnetic field, that is electric field and magnetic field, these are mutually perpendicular to each other. Here in electromagnetic wave, electric field, that is E, electric field vector, can I say electric field vector, that is E bar or E bar, and the magnetic field vector here, that is B bar, are mutually perpendicular to each other. ये एक दूसरे को तो perpendicular है ही. Mutually perpendicular to each other and also they are perpendicular. ये direction of propagation of wave को भी perpendicular है. Also B bar and E bar are vibrating perpendicular to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave. And इसका मतलब the electric field and magnetic field oscillating in the same phase, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और उसको भी प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर है. therefore these are a transverse wave, these are a transverse wave and oscillate in the same phase, oscillate in the same phase. ये सब सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं because they are mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation of wave. So option C is correct. They are mutually perpendicular and डायरेक्शन इज इन फेज, वो एक दूसरे को फेज में है, सब लोग एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन सी हियर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.